Good morning, class 11th. Let's continue our topic of Boolean algebra. So what is this topic is all about? We are having more about logic gates. More about logic gates. So in this, first we are having NOR gate. NOR gate means not or. So let's check the truth table for this gate. First of all, the NOR gate has two or more input signals but only one output signals. If all the input signals are 0, that is low, then the output is equals to 1. If either one of the input signal is high, the output will be low. So let's check it. NOR means जो भी आपके OR गेट का रिजल्टेंट है उसके आगे हमारे पास क्या आ जाता है, NOT. Similarly, like other gates, we are having two input signal and one output signal. So truth table for two input variables, and we are having two input variables. These variables must be x and y. So values of possible combinations 0 0 0 1 0 1. So the resultant will be 0 0 0, means when we are ORing x and y, that is x plus y. 1 1 and here we got the 1. अब हमें क्या करना है, not or means we have to find the complement of this. So when we are finding the complement of this is x plus y का complement, then the result will be 0 will become 1, 1 will become 0, again 0 and again 0. सो यही मैंने आपको बताया था, जब हम नॉर गेट यूज़ करते हैं इन दिस केस, अगर आपके पास इनपुट दोनों ज़ीरो हैं तो ही आपका रिजल्ट 1 रहेगा. अगर एक भी इनपुट में 1 है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा. लेट्स चेक द लॉजिक गेट डायग्राम. दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर वाई, दिस इज अवर OR गेट, and what we have to do after OR gate, we have to put the NOT gate. Okay, this is your F or you can say R. Next we are having NAND gate. NAND gate क्या कहता है आपका, it is not AND gate. इसमें भी हमारे पास क्या हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं एंड द आउटपुट विल बी सिंगल. सो अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, राइट, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में भी so let's find the AND. Okay, this is AND 0 0 0, again 0, दिस इज 1. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका और, दैट इज इसका नॉट या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट. ये हमारा क्या होगा, फाइनल फंक्शन. तो इसकी वैल्यू, जब ये सारे 0 हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, दे ऑल बिकेम 1 and this one became 0. ओके, सो NOR एंड NAND गेट में क्या होगा, जो आपका OR एंड AND गेट है, आपको इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा. लेट्स चेक द लॉजिक डायग्राम. दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z. 3 input lines. Your AND function, this is your resultant, ANDing all these 3 after, and then putting the NOT gate, and this is the final function. Okay, our next gate is XOR gate. It means
exclusive OR gate. So what this gate states, the XOR gate can also have two or more input would produce one output signal, means two or more input signals but one output signal. Okay. Exclusive OR gate is different from OR gate. OR gate produce output 1 for any input combination having one or more 1, but XNOR gate produce output 1 for only those input combination that have odd number of ones. It means जब हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन में ऑड नंबर वंस होंगे तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1. लेट्स चेक द साइन ऑफ XOR गेट. XOR गेट का साइन क्या होता है आपका, दिस इज द साइन ऑफ XOR गेट. लाइक इफ वी हैव टू फाइंड द XOR गेट तो हम लिखेंगे A XOR B. ओके, let's check for 3 input truth table. Truth table for 3 inputs. हमारे inputs क्या होंगे, x, y, z. यहाँ पे हम लिखेंगे number of ones. So the possible combinations are and here we are having the final function. ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस कैसे हैं. सिंगल वन है, इट मीन्स ऑड. Here also odd, here even, odd, even, even, odd. ठीक है, so for every odd we are having 1. यहाँ पे odd है, यहाँ पे 1 आएगा, and for this भी हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. इवन के लिए अगेन 0, ऑड के लिए 1, इवन के लिए 0 एंड ऑड के लिए 1. सो दिस इज द रिजल्ट. हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द रिजल्ट. आप पहले ये चेक करेंगे नंबर ऑफ वंस आपके पास इवन है या ऑड है. अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आपका रिजल्ट 1 रहेगा. अगर नंबर ऑफ वंस इवन है देन द रिजल्ट विल बी 0. So let's check the logic diagram of this. We are having 2 inputs. Let's check 3 input x, y and z. Okay, this is the logic diagram. So XOR addition can be summarized as 0 XOR 0 equals to 0, 0 XOR 1 equals to 1, 1 XOR 0 equals to 1 and 1 XOR 1 equals to 0. इट मीन्स जहाँ पे भी हमारे पास ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ 1 है तो वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा. व्हेन वी आर हैविंग even number of combination then the result will be 0. Next, moving toward our next logic gate, that is XNOR gate, exclusive NOR gate. In this gate, this gate produce output 1
for those input values those input combinations that have even number of ones. It means इसका reverse. Okay, let's check the truth table. X, Y, Z, your function are number of ones. So let's check the number of 1. This is odd, odd, even, odd, even, even, and odd. So the result will be 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, and here for this we are having 1. Okay. So the symbol for this is, that is a logic circuit X, Y and Z. X, Y, Z. सिमिलर है, सिर्फ हमारे पास क्या हुआ है, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ है या फिर नॉट हुआ है, तो वी आर पुटिंग अ डॉट हियर एंड दिस इज ओके. So with this we are finished with this chapter. Next we are having the last topic, how to डिज़ाइन अ लॉजिक सर्किट. इतने सारे लॉजिक सर्किट्स बनाए हैं, आई थिंक आपको आ गया होगा लॉजिक सर्किट बनाना. स्टिल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. We are having a function f for a, b, c, that is we are having 3 inputs, that is a, b, c, and our function is ab plus ac bar plus b bar, a bar and c bar. So let's write a and b or and not c. Writing this will help you how you have to draw the logic circuit. For plus we have to write or. Next we are having not B and not A and not C. So let's draw it. We are having A and B. A and B को हम क्या करेंगे, AND करेंगे. Okay, next we are having A and C naught. This is A, this is B, having A and not C. For not C, okay, this became C naught. Next we are having not B. This is B and this is not B. This is not A and this is C. This is not C. And we have to do AND. After doing the AND of these 3 inputs, what we have to do OR. Okay. This is the final result. Let's check one more example. We are having a function x, y, z. It means again we are having 3 inputs, x plus y dot x bar plus z bar dot y plus z. So again write x or y and not x or not y, not z and y or z. Let's make the truth table. We are having 3
functions x. First we are having x and y. इस पे हमें क्या लगाना है और. So this will be x plus y. Next we are having x bar and this is our z. Okay. यहाँ से हम x की केबल में से एक केबल ले लेते हैं. Okay. Next we are having y and z. For this we can take y from here and z from here. This is our final function. Okay, with this we have finished with this unit. I will send you the questions, short questions, MCQs, quizzes of this chapter on a WhatsApp group. Thank you, class.